Hey everyone, I am Afshin from Lifestyle by Sheens. Welcome to my channel, and in today's vlog I am taking you to Spain. And if you are interested in exploring the world, you are at right place. And during our Spain trip हमने सोचा क्यों ना एक दिन हम डिवोट करें रोंडा सिटी देखने में, जो कि मशहूर है दो चीज़ों की वजह से, एक तो बुल रिंग एंड सेकंड वाज द रोंडा स्टोन ब्रिज. Do not miss a visit to one of the most famous destinations in all of Andalusia, और जो आपको वहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स भी नज़र आएंगी और स्टोन ब्रिज के साथ साथ हाउसेस ऑन द एज ऑफ द कैनियन और भी बहुत कुछ. अक्सर रोंडा ब्रिज की पिक्चर हमें पोस्ट कार्ड्स पे भी नज़र आती है, तो बस यही कुछ सोचते हुए हमने प्लान आउट किया कि हम रोंडा देखते हैं. सिटी ऑफ ग्रेनेडा में हमारा स्टे था, एंड थ्रू रेंटल कार वी वर गोइंग टुवर्ड्स रोंडा सिटी. और आज जैसे कि हमने स्टार्ट लिया फ्रॉम ग्रेनेडा टूवर्ड्स रोंडा सिटी, और 2 घंटे का रास्ता था, और हर तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाए ऑलिव ट्रीज एवरीवेयर हमें नज़र आ रहे थे. नो डाउट पीपल लव. I highly recommend making the day out of it, and if you're in Spain, visit the city of Ronda, visit the white houses you can see. Originally painted white to help keep buildings cool from the sun, and उसके बाद by law citizens white color change नहीं कर सकते थे. Ronda, this is more than just another white village. It's a small city bursting with interesting attractions and charming corners. You will see panoramic view around the Neuva Bridge are striking. You can also take a stroll through the historic center and visit the bullfighting ring, which I'm going to show you. Our first stop was bullfighting ring. बुलफाइटिंग तो उस वक्त वहाँ नहीं हो रही थी, एक्चुअली वंस एयर कंडक्ट की जाती है, और बुलफाइटिंग रिंग देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट इन स्पेन. इनसाइड इट यू कैन विजिट द बुलफाइटिंग म्यूजियम एज वेल, जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एंटीक फायर आर्म्स भी रखे हुए हैं. And this is the stone bridge which we wanted to see. Ronda city is surrounded by pristine mountain scenery. The town delivers thrilling views of dramatic landscape over a deep canyon.
Ideally, you should set aside some time for shopping and buying some souvenirs from Ronda. We did some hiking on these majestic mountains and would be able to get some stunning shots. For On the way back, we saw some Inukshuk stone structures, maybe some travelers put together, and my son created few as well. And this was our visit to Stone Bridge, Ronda. For next day, we planned to visit city of Grenada. That vlog is also very interesting. Do not forget to subscribe my channel and click on notification bell as well. Being an artist, I couldn't stop my brush to create Ronda, the stone bridge, on my canvas. Puente Neuvo. Take care and be positive, trust me, and keep enjoying exploring the world with me.